Good morning everyone. Welcome to the Misconceptions in Physics YouTube channel. So my name is Thirteenth. I teach physics in an international school. My work or my hobby is to create videos on various topics. Currently we are working on, I am working on homework portal wherein we usually give homeworks to students, and unfortunately many of them, they defer to do it, or maybe they think homework is a burden. So what I do is, for all my students, I just put across 5 MCQs, so that they can start solving it. And of the rate, from yesterday onwards, कल से मैं हिंदी में भी बात करने के लिए शुरू कर दिया हूँ, and I hope आप मेरा हिंदी एक्सेंट को लाइक करेंगे, और अगर नहीं तो बता दीजिए, थोड़ा रिफाइन कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो नॉर्थ इंडिया से नहीं हूँ, आई एम बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु, एंड थोड़ा मेरा हिंदी में थोड़ा फर्क तो पड़ सकता है, बट लेट मी ट्राई एज मच एज पॉसिबल. नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल, है ना. तो ठीक है, जो सलमान खान और शाहरुख खान का मूवी देख के, अमिताभ बच्चन का मूवी देख के बड़े हुए, सो इसमें से थोड़ा मिलता है. अच्छा, तो ये वीडियो जो आप पीछे देख रहे हैं, दिस इज ओनली क्रिसमस वीडियो. टुडे इज क्रिसमस. हे, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट टुडे इज क्रिसमस, एंड आई विश यू ऑल ए हैप्पी एंड ए मेरी क्रिसमस. क्रिसमस तो बहुत एंजॉयबल सेशन है. I don't think many students will also read or go through it, but there should be some consistency. As a result of it, I had made this video even today, and even today what I do is I have made it to a point. When I finished my graduation, my parents are teachers. I asked them, what is your suggestion to me as a teacher, because अभी मैं junior teacher से जा रहा हूँ 20 years के पहले. so क्या है suggestion? उन्होंने बोला कि जब भी क्लास को जाना है तो प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाओ, पहला सजेशन. और बाद में जो भी करना है, एवरी डे बिफोर गोइंग टू द क्लास, और एवरी डे यू जस्ट अपडेटेड. 5 मिनट अपडेट करो बस. कुछ भी पढ़ना है, 5 मिनट्स यू स्टार्ट रीडिंग इट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई आल्सो टेल टू मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स. वॉट एवर यू स्टडी, वेदर यू बिकम ए प्रोफेशनल, डू वॉट एवर यू वांट इन लाइफ, बट सी टू इट दैट today should be better than yesterday by at least 0.0001%. Never become stagnant. Keep on working. Right? So with this, let me wish you all a Merry Christmas and enjoy yourselves. But of course, wherever you find time, because सब कुछ मोबाइल में है, just have a look at it and watch these videos. These are all solutions for yesterday's 5 MCQs that I had put it across. And then you get to know where you went wrong or what are those questions special about. Of course, some questions today which we are discussing are very special questions, wherein many of you would have been, or maybe if I had given these questions in one of the test papers, I observed that many of them had committed a mistake. Do watch this mistake, do watch these questions once again. Okay, so with this brief introduction, let me begin my video. Right. Okay, so I hope my screen has been shared. If you want to see more of my lectures or want to know more about me, you can visit my website here, ratankar.com. And if you want to see only the videos that I post in the homework portal, or whatever I had done earlier, you can look into this. This is a sub part of this. Okay, so with this brief introduction, let me just begin the homework, the 13th homework, the 5 MCQs that I had put it yesterday, and today I'm just providing you the solutions for it. ठीक है, अभी ये देखेंगे, sports car is accelerated from 0 to 100 km/h. ठीक है, पहले what we have to do is we have to read appropriately. When it says 0 to 100 km/h, there are two different things. We should not read like that, but instead ये दोनों मिलके join करके देखना है. अगर ये दोनों मिलके join करके देखेंगे, so it says from 0 to 100 km/h, 0 to 100 km in 1 hour. So इस स्पीड से ये व्हीकल जा रहा है. ठीक है, ये कार जा रहा है. इसका मतलब है इसका वेलोसिटी तो 100 km/h है. ये दो दिखाता है. ओके, सो दिस शुड बी 100 km/h. इसको पहले क्या करना है, हमें मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है. सो इसके लिए क्या करना है, 100 into 5/80 लिखना है मीटर पर सेकंड. अरे यार, ये कैसा नया आ गया 5/80. सो इसको भी निकालेंगे. So 1 km/h can be written as
1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड्स। ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर को 1000 बना दिया, 1000 मीटर्स बना दिया, और आवर को 3600 सेकेंड्स बना दिया। तो ये जीरो घट जाएगा, और इसके लिए हमें 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गए। ठीक है, सो वेलोसिटी टू 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गए। और बाद में अभी एक टाइम भी दिया है। अभी क्या पूछ रहे हैं, क्या निकालना है उसमें? एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ द कार विल बी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, सो v क्या है? 5/18 फाइनल वेलोसिटी। नॉट फाइनल, अरे यार वी मेड अ मिस्टेक। ओके, 5/18 तो ये कन्वर्शन है ना, सो इसको निकालना है, इसको लिखना है। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी तो 500 डिवाइडेड बाई 18 है। ठीक है, सो 500 डिवाइडेड बाई 18, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम कितना लगेगा? टाइम तो 3 सेकेंड्स लगेगा। तो इसका मतलब है 500 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3 54 आ गया। और इसको अगर देखेंगे, ये आंसर इधर कहीं भी नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है हमें? यू नीड टू कन्वर्ट इट टू द वैल्यू ऑफ जी। So how do I convert it to value of G? So what is G value? G value 9.8 है। अगर अप्रोक्सीमेशन देखेंगे, इसका वैल्यू तो 10 आ जाएगा। सो इसका मतलब है इसको हम 50 इंटू 10 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 54। इसका मतलब है इसको तो 50/54 G लिख सकते हैं। अगर ये देखिए, ये 50 और 54 होगा, तो 54/54 1 हो जाएगा। ओके, सो बट 50 है, इसीलिए 1 से थोड़ा कम होगा इसका वैल्यू, इट विल बी लेसर देन 1। अगर ये लेसर देन 1 है, तो विच ऑफ दीज ऑप्शंस कुड बी राइट ओवर हियर? दिस कैन नॉट बी 0.1, 0.3, इट इज वेरी क्लोजर टू 1। इसका मतलब है आंसर सी इज द राइट आंसर, राइट? So answer C is the right answer. So this value should be 0.9 G. ठीक है, now let us move on to the next one. A girl throws an object horizontally at time t equal to 0. Okay, a air resistance can be ignored. At time t equal to 0.5 seconds, the object travels horizontally a distance x in meters while it falls to a distance y. अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टली भी ट्रैवल कर रहे हैं, वर्टिकल भी ट्रैवल कर रहे हैं। सो इसीलिए व्हाट इज दैट वी नीड टू अज्यूम? द गर्ल इज नाउ स्टैंडिंग ऑन ए क्लिफ, राइट? Why cliff? Why can't it go upwards? Why don't I stand in ground and throw it upwards? अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं, when we are throwing it upwards, तो उसका मतलब क्या होगा? सो ये तो एक एंगल से थ्रो करना पड़ेगा। हम तो एक एंगल से नहीं थ्रो कर रहे, ये तो हॉरिजॉन्टल से थ्रो कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर ये हॉरिजॉन्टल से थ्रो करेंगे, तो ऐसे चलेगा और नीचे ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना? सो इसीलिए we consider that the girl was standing on a cliff, okay, on a hill, and then she was throwing from here. Let us draw the diagram. So अगर ये ऐसे थ्रो कर रहे हैं, gravity, because of gravity, the object will now start falling downward like this. Okay, so पहले तो हमने प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर दिया। अभी डिटेल से भी क्या दिया है? t इक्वल टू 0.5 सेकेंड, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड क्या करेंगे हम? इधर लिखेंगे। t इक्वल टू, इस ऑब्जेक्ट तो t इक्वल टू 0.5 सेकेंड इधर रहा है। लेट मी राइट इट एज O here, let me write this A here. T equal to 0.5 second, ऑब्जेक्ट इधर है। ओके, और ऑब्जेक्ट has traveled a distance x in meters. इसका मतलब है यहां से यहां तक तो डिस्टेंस x है, और टाइम टेकन है 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, और इस समय में डिस्टेंस कितना आया है? इसका डिस्टेंस तो आया है y है। ठीक है, सो ये y आया है, सो ये नीचे तो y डिस्टेंस आ गया, ये हॉरिजॉन्टल में x डिस्टेंस आ गया। ठीक है, पहले डेटा मुझे दे दिया, और अभी निकालना क्या है? ये व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? ये हम जो वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं ना, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ux, एंड व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फॉलन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में देखना है। ओके, आई डोंट वांट दिस वन हियर। t इक्वल टू 1 सेकेंड कहां आएगा? ये तो एट 0.5 सेकेंड है। t इक्वल टू 1 सेकेंड इधर तो नहीं होगा, शायद ये ऊपर तो नहीं होगा, सो इट वुड हैव कम डाउन, ये तो नीचे आ जाएगा और इधर रहेगा शायद। ठीक है, ये इधर रहेगा। सो एट पॉइंट बी इट वुड हैव बीन एट 1 सेकेंड। सो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ये डिस्टेंस है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम y डैश मानेंगे, इस डिस्टेंस को y मानेंगे। ठीक है, हमें y डैश इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख रहा है? प्रॉब्लम देखने से बहुत मुश्किल लग रहा है, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट इजी। लेट अस फर्स्ट सॉर्ट वन बाय वन। ठीक है, अगर एक नाट है बहुत, ओके, व्हाट यू कॉल, इट अपीयर्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, तो क्या करना है? स्लोली एक एक स्ट्रैंड को निकालना है, यही करना है हमें इधर भी।
सो इसका मतलब है फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द इनिशियल वेलोसिटी। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है हमें एक क्लू मिल जाएगा। क्या है क्लू है? इनिशियल वेलोसिटी सर इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अलोंग द एक्स डायरेक्शन। सो नाउ लेट अस राइट डाउन। कैसे लिखते हैं ux? ux is nothing but distance traveled by the particle x divided by the time taken by the particle to travel this distance, which is 0.5. So we need to find out this value, which should be x into 1 by 0.5 क्या है? इसका value है 2 है ना? If you want, I will write it like this. 5 by 10, 2 है. So this value is equal to 2x. So ux equal to 2x. So what is that we have got? We have got an expression for the initial velocity. इसका मतलब है 2x इधर है, ये दोनों आंसर गलत है। ठीक है, इसमें से एक आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्सप्रेस दिस वैल्यू। पहले तो आ गया, बाद में अभी वही निकालेंगे। इसमें वही पूछा है क्या? नहीं पूछा है, फिर भी हम वही निकालेंगे। लेट अस सी व्हाट वी गेट। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। व्हाट इज uy? क्या है uy? क्या है? हमने अगर ऐसा फेंका है हॉरिजॉन्टल में तो वर्टिकल वाई वेलोसिटी क्या होगा? वर्टिकल वाई वेलोसिटी तो 0 होगा। क्यों 0? बिकॉज वी आर नॉट ड्रॉपिंग इट, सॉरी वी आर नॉट थ्रोइंग इट डाउनवर्ड्स, है ना? सो इसीलिए वी हैव ओनली थ्रोन इट लाइक दिस। सो इसके मतलब इसके 0 हो जाएगा प्लस हाफ इंटू ये वही क्या है? ये वही अगर ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ये तो नेगेटिव होना चाहिए। अरे क्यों नेगेटिव भाई? तो इसका नेगेटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। अगर नीचे आ रहा है तो ये तो नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस है, जो भी मेजर करेगा आप वो तो नेगेटिव होगा। सो इसका मतलब ये भी माइनस जी है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इंटू टी स्क्वायर। ये इधर का टी क्या है? टी तो 0.5 है, इसका मतलब इसको 0.25 हो जाएगा, राइट? एंड ये y, व्हाट इज y डिस्प्लेसमेंट? y डिस्प्लेसमेंट भी हम नेगेटिव y एक्सिस में ले रहे हैं। सो इसका मतलब है ये भी माइनस y है। सो इसका माइनस y, इसका माइनस और इसका माइनस घटेगा और यू विल हैव y इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 0.25 g डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो मैं ऐसे ही रखूंगा। ओके, आई विल नॉट चेंज दिस वन, लेट मी कीप इट लाइक दिस इटसेल्फ। नाउ यही प्रिंसिपल को हम इधर भी अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कुछ भी बदल नहीं रहा है। तो इसीलिए इफ आई अप्लाई फॉर दिस डिस्टेंस आल्सो, इसका क्या होगा? y डैश इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। नाउ uy क्या है? एज यूजुअल 0 प्लस हाफ इंटू व्हाट इज ay माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अगर इधर इधर क्या बदल रहा है? 1 सेकेंड हो रहा है, 1 हो रहा है। इसके लिए द आंसर नाउ वंस अगेन दिस इज माइनस y डैश हियर, है ना? सो इसके लिए योर y डैश वुड बी इक्वल टू g/2, g/2। अच्छा, तो why do I need two equations here? ये तो पूछने वाला ही क्वेश्चन है। सो रीजन इज बिकॉज आई वांट y डैश इन टर्म्स ऑफ y। देखिए y डैश इन टर्म्स ऑफ y, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। सो लेट मी, अरे यार ये तो बीच में आ रहा है, चल इसको इधर निकालेंगे। ठीक है, नाउ नाउ y डैश, नाउ मुझे कहाँ गए? नेक्स्ट स्लाइड को चला गया। ओके, सो y डैश बाई y, आई होप यू आर एबल टू सी दिस इन दिस बैकग्राउंड। अरे मुझे बैकग्राउंड अभी नहीं चेंज करना आता है, आई डोंट नो हाउ टू चेंज दिस। ओके, लेट इट बी लाइक दिस। ओके, y डैश बाई y, नाउ आई विल डिवाइड दिस y डैश डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y डैश के वैल्यू क्या है? g/2, g/2 है, डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू क्या है? 0.25 g डिवाइडेड बाई 2 है। इसका मतलब इस g और इस g चला जाएगा, ये भी तो घट जाएगा। तो इसका मतलब है ये आंसर आएगा 1/0.25। प्लीज हैव योर नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट वर्किंग on it if you have not worked out, so that you get a clarity of what I write here. Okay, to make my things more easier. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि ये कलर हट जाए। ओके, आई विल ट्राई टू रिमूव दिस समहाउ। अरे कुछ पेंट गेंट करवाना पड़ेगा ना। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ओके, y dash is equal to, let me write this down as y divided by 0.25, which should now be equal to 4y. Okay, or maybe I'll change the ink. अरे यार वो तो इंक तो चेंज कर सकता हूँ मैं। कहाँ है? y dash is equal to
So y dash is equal to 4 times. Wow, see how nicely it is coming. Y dash is equal to 4 times y. So therefore the answer here, अरे फिर से चेंज करना पड़ेगा. I'm planning to do something with my directly on whiteboard. ठीक है, whiteboard में जो teach करते हैं ना chalk and talk, वो तो बहुत अच्छा होता है. But unfortunately, you won't get the clarity of my writing. So that's why I'm worried about it. And every time you have to rub and then do it. And as a result of it, I felt this would be fine. But anyway, let me see. Let me think over it. If these kinds of problems are persisting, then definitely I would opt for this one. Hey, we are missing something. Okay. Now, अगर ये देखिए y dash is equal to 4 times y, इसका मतलब यही right answer है. So ये भी गलत होगा. So this is the right one. Okay, I hope you understood this problem. This problem is not very tough. Only thing is you should understand निकालना क्या है. ठीक है? So most of the time we ask this question. Okay, when I was studying also, there were lots of North Indians with me. They used to ask, okay, when the problem is projected, the first thing is nikalna. There were lots of people from UP and Bihar. They used to ask, "Arey bhai, nikalna kya hai?" I remember this. Okay, nikalna kya hai? So I used to think nikalna matlab what is that you need to pull out of it. But that is a normal language, people use it. Okay, so now let me move on to the next question. An object of mass m is sliding down a ramp. This is mass m. During the motion, it travels a distance x, okay, and falling through a distance, vertical distance y, h. The coefficient of dynamic friction between the ramp and the object is mu. Okay, the friction bhi hai. What is the total energy transferred into the thermal energy? Total energy transferred into thermal energy when the object travels a distance x. Okay, the thermal energy का जब भी मैं thermal energy का क्वेश्चन देखता हूँ, so students will definitely ask, सर अगर thermal energy है तो टेम्परेचर दे देना चाहिए. ओके, टेम्परेचर नहीं है, अरे टेम्परेचर का आवश्यकता नहीं है इसमें. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस. व्हाई शुड इट मूव डाउनवर्ड्स? सिंपल है, पहले हमें फोर्स निकालना है. कैसे फोर्स निकालेंगे? इसमें फोर्स निकालना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखना है. ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स है और ये mg फोर्स है, और इसको अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इसका मतलब ये एंगल, ये फोर्स में थोड़ा ज्यादा लिख दिया है इसमें. सो टू गेट ए क्लैरिटी, सो दिस शुड बी mg cos थीटा. और इधर क्या फोर्स है? इधर तो mg sin थीटा है. The first time when people start writing this, okay, I was given this question earlier also, एक टेस्ट में दिया था. So क्या लिखेंगे वो? So they will think that okay, अगर इसका फ्रिक्शन भी दिया है, म्यू भी दिया है और ये भी दिया है, they will just write mu times mg into x should be the question, should be your answer. Okay, this we can use it only when you have the object which is sliding like this horizontally. अगर ये इस एंगल से जा रहा है तो mg तो नीचे एक्ट कर रहा है. ठीक है, सो इधर तो फोर्स है म्यू जी mg sin थीटा, और if you ask me okay what is the force over here, this force is your frictional force. Frictional force लिखेंगे हम ff is equal to mu times n, which should now be equal to mu times mg cos theta होगा. ठीक है, so you should not be writing mu times mgx. Okay, so the actual answer here would be work done. Why does it get heated up? Because of friction. This should be mu times n multiplied by, so I'll just write this as frictional force into displacement, which should be mu times n into x, which should be mu times mg cos theta into x. Okay, but somewhere we are getting stuck here. See, none of these questions are similar to it. Now, none of the options are similar to it. So, इसका मतलब है we have an alternative approach. Alternative approach क्या है? Now, let us read the question once again. An object of mass, during the motion, it travels a distance. Now, read here. Object of mass is sliding down a ramp at constant speed. Very important. When you say constant speed, what does it tell you? ये frictional force इधर है. This is equal to your mg sin theta, right? So, if this is equal to mg sin theta, तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि we should take this force multiplied by this displacement. Right? So work done should now be equal to, instead of writing like this, okay, so I will not put ff is equal to mu times mg cos theta, but instead I know that ff is equal to f, capital F applied. Okay, I will once again write ff into x, but this time I'll write this as f into x. Why f into x? Because the object is moving with constant speed. अरे फिर से वो दूसरा जोन में चला गया. Okay, fine. Okay, f into x. Now what is f here? This should be equal to mg sin theta multiplied by x.
Now what we do is let us look at this triangle. ठीक है, ये triangle देखिए. So let me write down this triangle. कहाँ लिखूं मैं? इधर लिखता हूँ. ठीक है, ये H है और ये इंक्लाइंड प्लेन है, पार्ट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. देखिए ये H लिख दिया और ये X लिख दिया. और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. अगर ये एंगल थीटा है, this angle is theta, then we know that H by X opposite by hypotenuse is equal to sin theta. इसका मतलब है H is equal to X sin theta. ठीक है, now X sin theta कहाँ है? X sin theta इधर है, X sin theta है. तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? इसको mg into h लिखूंगा. ठीक है, अभी आ गए ना हमें. So the answer here is the option A, right? So this is the way how we can do it. अगर आपको एक easy method चाहिए तो मैं easy method भी दे दूंगा. Okay, if you want to do it by forces, you can do it like this. अगर आपको easy method चाहिए, then what I will do is, what is work done? Work done should be like this, downwards over here. Okay, so therefore work done should now be equal to a weight dot h. Okay, y displacement dot x over here. What is the displacement here? See, this is the weight. What is the y displacement? Y displacement to h ही है. Okay, so directly you can write mgh. अरे ये कैसा लिख सकते हैं? फ्रिक्शन के लिए आ रहा है. You can ask me this question. अरे जो भी हो रहा है इधर, gravity is pulling it downwards. And at the same time, okay, while it comes down, ये देखिए, so they displaces by a distance h over here. ये भी आ सकता है. This idea comes to you when you start working on several problems. ठीक है, पहले जब आपको ये मेथड नहीं पता है, okay, I cannot just directly give you and ask you to work on this method. So I am giving you this method. ठीक है, I hope you understood this. Thus the answer is going to be mgh. Next. अरे यार, let me remove this video here. This video is misleading. Okay, just a minute. Let me stop my video. और मैं एक काम करता हूँ, I will just blur my background. वो तो ठीक रहेगा. ठीक है, क्योंकि दूसरों का वीडियो है यार. I cannot keep on advertising without their permission. It is incorrect. So only for beginning I did this. ठीक है. Now a waiter carrying a tray. अरे कहाँ गए? ठीक है, a waiter carrying it. अरे यार फिर से white हो गया. अरे यार एक मिनट. ठीक है. A waiter carrying a tray is accelerating to the right as shown in the image. Okay, what is the free body diagram? Free body diagram of the forces acting on the tray. So ये tray है. Okay, do not consider this one. Okay, so therefore this is my tray. So अगर इसका tray है, so इसका weight of the tray कहाँ लगेगा? इधर लगेगा. mg इधर लगेगा. और what is the force acting here? Normal force तो इधर लगेगा. ठीक है, and अगर ये normal force लगेगा, then what else can we have? Now is there a force acting upwards here? No. Until unless you write a component, you will get it there, right? If you don't write a component, you won't get it, right? So no, okay, so we will think, okay, let us write a component also here. Let us write a component here. Now should the component be larger, smaller? क्या होना चाहिए? क्योंकि ये देखिए three forces है. क्योंकि कौन जाना है कि what kind of idea did the user use while the examiner thought of, okay, while he put it across. Okay, now अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, let me call this as n dash. So n dash क्या है? ये तो एक एंगल बना रहा है, so इसके लिए थीटा है, and then n dash should be equal to n cos थीटा होगा. ये n dash क्या हो सकता है? This n dash should be less than n होगा, है ना? So इसीलिए ये डायग्राम तो गलत है. Okay, because this is my n here, this is my n dash here. n dash तो बड़ा लग रहा है. And if you look at this also here, this is my n over here, this is my n dash over here, and n dash is greater than the weight over here. Okay, so this is also not possible. N dash cannot be greater than weight because, okay, so you see n dash can be equal to weight over here. So this can also be incorrect. Now इसको देखेंगे. Now इसमें एक n है and एक c है. Now this value is much lesser than this. Is this possible? Now let us investigate that. Now first thing that we need to look at is, if this is mg, now if I draw a line opposite to this would be your angle theta. ये line क्या हो सकता है? ये तो mg cos theta हो सकता है. mg cos theta हो सकता है. इसका मतलब है n should be equal to mg cos theta है. इसका मतलब है n should be less than mg. अरे क्यों less than लिख रहे हो? Okay, so the answer here is this.
because cos theta will always be less than 1 or equal to 1. When will it be equal to 1? When theta equal to 0. Agar theta 1, even agar theta is having an angle, then definitely cos theta should be less than 1. So therefore, definitely this will also be incorrect. This will also be incorrect. So the last option, this is correct, which means this force should be larger than this one, right? And as a result of it, D is the right answer. Okay, so ये थोड़ा logically reason करना है पहले, and then you need to answer it. Okay, if you do it on the fix, then definitely you might land into one of these incorrect answers. Right. Next. A student measures the radius R of a circular plate to determine its area. Area तो मैंने लिख दिया, answer दे दिया भाई. The absolute uncertainty in R is delta R. Okay. What is the fractional uncertainty in the area of the plate? So क्या निकालना है? Delta A by A निकालना है ना? So delta A by A इसमें क्या मिल रहा है? इसके लिए delta A by A is nothing but delta, 2 times. अच्छा तो okay, let me go from scratch. For those who know this. Okay, so delta of pi divided by pi plus 2 times delta R by R. मैंने इसको क्यों लिया है? क्योंकि ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट, द चेंज इन कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो ये तो 0 होगा प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर होगा. ठीक है, सो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर कहाँ है? आंसर इज ये है. So fine, so with this we have come to an end to which one? The homework 13. So far 65 questions in mechanics has been done. I hope अगर इस 65 questions को आप practice करेंगे, then definitely your chapter 1 and chapter 2 would have been thorough. Okay, so you will be able to answer most of the questions. We have done sufficient questions in estimates, then in error analysis, then velocity, VT graph, acceleration, सब कुछ दाजन कर दिया है. ठीक है, so now you should be able to answer 8 questions in your paper 1 of your HL portions or your 6 questions in your SL portions, which means you would be ready by now. If you have done it faithfully, you would be ready by now something like 8 divided by 40 for your HL, which is around 1/5 of it, which you should definitely get around 20%. इससे कम लगेगा ना, then you have not done anything properly. अगर SL portion में आप कर रहे हैं, then 6 divided by 30 should be once again 20%. 20% of the questions you should now be able to answer it. ठीक है, ये तो गारंटी है. इसका मतलब है इसमें कितना निकलता है हमें? We get only 20-30% out of this. Okay, 20-30% of it, which means that 30% of it will be around 0.6 or somewhere around 0.6 marks. I think 6 marks you get it across here. So definitely 6 marks is now in your hand out of 100. Okay, so I think we have done sufficient questions on mechanics, and it is now time for me to switch over to the next topics. Let me see if I have some more questions which are new. अगर है तो maybe अगर है तो I'll just do those. Else I will continue with the new topics. I think mostly I will be starting with thermal physics. वही अभी देखना है, thermal physics या circular motion and gravitation भी देखना है. अच्छा, मुझे एक query आया है. I just got a query today from one of my students saying that asking for something like questions on structured paper. ठीक है, ये भी तो बनाना है. Then I will do one thing. अभी से मैं थोड़ा structure paper पर थोड़ा focus करता हूँ. ठीक है, that is very important now for you guys to write your structure paper 2 also. ठीक है, fine. Thank you friends for watching this video until the end, and hope you are liking these videos. मेरा new avatar हिंदी में है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके. And do comment on my videos. Do let me know what else would you like to expect, so I can do my best. I'm not spending much time, of course. So 15-20 minutes तो हो जाएगा, कोई problem नहीं है. And do like, share this video with your friends, and subscribe to my channel for more updates. This would really appreciate me, as more number of subscribers, more number of views, and direct comments saying that okay, क्या अच्छा है, क्या गलत है, that will always be useful. Thank you once again for watching and being with me so far for the past 4 months. Thank you.